A very good evening, everyone, and thank you for joining us today. This is another informative session that we have brought in our series of, uh, you know, insightful session series where we want to share information. We want to empower people when it comes to chronic conditions and what can they do about it. So today's session is about autoimmune conditions. Um, a lot of you had registered for today's workshop, and you had mentioned that you have some autoimmune condition or the other. And most of you will agree with me that these diagnoses did not happen overnight. You had few symptoms here and there, which was often dismissed as being very normal, can be associated with aging, or can be, or maybe some of you had just started with some GI symptoms, some kind of pain here and there, and then few years down the lane, you got a diagnosis of an autoimmune condition. So what I'm trying to say is that it did not happen overnight. Something was brewing in the body, which was dismissed, and finally, it got a label. So what really has happened over this period of time, and what has contributed to this autoimmune condition? That's what we are going to talk about today. I'm Dr. Ruhi Agarwala, co-founder of Functional Medicine Clinic, and we have Dr. Ashwani Garg, also co-founder of Functional Medicine Clinic, and we will be discussing about what really autoimmunity is and what are the various contributing factors which is contributing to immune system getting so dysregulated and giving off various signs and symptoms. And finally, what can we do about it? Does it require one to be on pills for life, medications which can suppress the immune system, or can we do something more holistic about it? So let's dive deeper into it. Over to you, Dr. Ashwini. Thank you, Dr. Ruhi, and good evening, everyone. Thank you so much for taking out time and spending this evening with us. All right. Autoimmunity is a difficult problem, and unfortunately, a lot of us are now suffering from it, which is not a healthy state. Okay, and more important is, a lot of people are getting diagnosed, but most of the time it is told it is some genetic problem. We don't know why it is happening, and this is the way it is going to be. At maximum, we can sort of reduce the problem by taking immune suppressions. And we start with one drug, then we have to start another one. Typically, this is the scenario. And eventually, damage keep happening. Yes, it is told that we are slowing the progression of the disease, which is fair. I mean, of course, the drugs are able to relieve the problem to some extent, relieve the pain to some extent, but the person is never off the hook. Okay, and these drugs, even though they are relieving the symptoms, which are very very aggressive symptoms, but body is still under attack, and these drugs come at a cost to the body. They don't simply, you take it and then it's all right. It comes at a large cost to the body. So rather, only depending on the drugs, if we understand what are the drivers of the problem, what it is caused by. Now, any diagnosis is a club of symptoms and markers from a lab or a scan, things like that. But diagnosis does not say where is this problem coming from. Probably this is where functional medicine, we're trying to figure out the reasons and possibilities why the problem has started in the first place. That has led to the diagnosis. Now, if we look deep enough, we will figure out so many possible reasons which has been the driver of the problem. And if we reduce the driver, eliminate the driver, there's a possibility that immune system will also calm down. Why would our immune system attack our own self? It is not a crazy human system that it will keep producing disease only. There's something that we must be doing which is wrong, which is leading to the problem. And this is what is wrong is what we are going to discuss today.
And if we follow that much, I think a lot of good can happen. Hmm? Now, autoimmunity in simple terms, are two important things that are happening there. One is immune is dysregulated. This means its ability to figure out right and wrong probably is not right. Is one of the simplest way to look at it. At the same time, immune system is also compromised. Now, anybody with autoimmunity, immune system is not strong. Now, typically, contrary to the belief or contrary to the understanding that most of the uh, people told that immune system is sort of become more aggressive against our own self. It is aggressive. It is causing some damage, but at the same time, it is not able to protect our body from the invasion, especially the infections. So autoimmunity means dysregulated. Immune is dysregulated, plus it is a compromised immune system. Okay. And when we further suppress the immune system, our body becomes very, very vulnerable to a lot of the problems, infections that can further cause a lot of issues. So it is important. It is important that we all of us sort of get some sense of the problem so that we can take a right course. Now, its immune system is dysregulated, and there should be something which is triggering it, and one of the trigger could be the food that we are eating. Now a lot of people are eating gluten, they're able to digest it and there's no problem, but people with autoimmune problems, you will realize whenever you take gluten, wheat, or milk products, especially protein of the wheat or protein of the milk, you will have more pain. As a person with some autoimmune problems, you reduce your wheat, you reduce your milk, and you will see there's a reduction of problem in your body. It may not completely go, but there's a reduction in the problem. Similarly, sugars is a big problem. Now you reduce refined food, you reduce your gluten, you reduce your milk, and your problem will feel better. Now this simply means that this is one of the contributor to the problem. Okay. And there's enough data, there's enough research today that these food proteins or refined foods can trigger the immune system in a bad way, leading to ending up to a autoimmune state. So this is not difficult for us to change our diet to a healthy state. If we have to eat bread, we can eat a bread made without gluten. If you have to make tea, if you have to make drink milk, probably we can replace cow milk with, let's say, coconut milk, and we can reduce the inflammation in our body. Majority of the people with autoimmunity, they have a history of poor digestive tract. They will have gas, bloating, constipation, diarrhea, reflux. So any problem today, somebody is diagnosed with rheumatoid arthritis, they will have a history of 20 years of bad digestive system. Okay. Very unlikely that somebody will get diagnosed with autoimmune problem out of no issues in the body, absolutely all right, and out of nowhere they get an autoimmunity. Unlikely. Almost 80% of the cases to 90% of the cases that at least we speak to with, we try to understand the problem. They say, I have a long-standing digestive issues. And there's a situation called leaky gut syndrome or increased intestinal permeability. Our digestive system is made in such a way that it will break the food down, take the nutrition, and throw the toxins away. So it's a sort of a filtration process also, right? So it'll take the nutrition and throw the toxins away. But if this pores of this filter gets broken and it becomes bigger, and the permeability of the intestines become higher because of the breakdown of the tight junction between the intestinal cells, that also can trigger a lot of inflammation in the body and eventually lead to autoimmunity. And one of the primary trigger for this leaky gut can be gluten, which can be in the wheat. Another thing that can happen, once this proteins from the wheat, they enter the system, they something called molecular mimicry. The gluten proteins share a structural similarity with body tissues.
Immune system trained to attack gluten may then mistakenly attack the body's own cells. Now, gluten molecule should be broken down and broken into smaller pieces of amino acids in people where there is no problem. But people with autoimmunity, looks like this gluten molecule is not properly broken down in the gut, passing into the bloodstream, and because it has a similarity, triggering the immune system, and same immune system cells may attack the similar tissues in the body. This is called molecular mimicry. Okay. Now, what are the reasons that our gut becomes more permeable? Let's say poor diet, right? Gluten, dairy, genetically modified foods. A lot of the gluten today we eat is genetically modified. The protein, immune system is not accepting the protein that is there in the gluten. It can be a lot of carbonated drinks, sugary carbonated drinks, which can cause a problem. It can be alcohol. Some people are just drinking alcohol and their intestinal lining is broken down. Painkillers can cause this. Antibiotics, long-standing multiple use of antibiotics can cause a leaky gut. Okay, stress can cause leaky gut. Higher oxidative stress can cause leaky gut. Toxins, heavy metals, mercury, aluminum can cause it. And more important, very crucial is infections in the intestine that we call as dysbiosis, which will also lead to leaky gut and thereby immune dysregulation and autoimmunity start building up. So I mentioned majority of the people with autoimmunity have a poor digestive system. You fix the digestion, you work on your digestive system, doesn't matter it's lichen planus or psoriasis or rheumatoid arthritis, your symptoms will start getting better as you improve your digestive system. Okay, so in leaky gut, there's a barrier damage. There's a epithelial lining, single cell lining in the intestine. That barrier is broken, and this can be broken by poor diet, chronic stress, medications, things like that, and thereby immune activation. 70% immune system in the body is lining at the gut. The gut lining is fully covered by the immune cells. If anything foreign, unwanted thing that is getting in touch with the immune system, because the immune system is lining there, bacteria, food particles, toxins entering the bloodstream, triggering a systemic immune alarm and a widespread inflammation. Okay, and with this keep continuing, we don't fix the gut for 20 years, 10 years, then eventually it will become the specific autoimmune problem. Can be rheumatoid, can be psoriasis, things like that. So one of the major driver of the problem apart from the food is leaky gut or increased intestinal permeability of the gut. Now, one of the reason of increased intestinal permeability of the gut is infections of the gut. So poor food, leaky gut, and leaky gut is caused by the infections, and this we call as dysbiosis. Now, our gut has trillions of microbes, bacteria, yeast, things like that. Okay. Now, when there is a balance which is gone, the good microbes and the pathogenic microbes balance is out, which means there is more of the pathogenic microbes, less healthier microbes are reduced significantly. That is we call dysbiosis. And when this overgrowth happens, they disrupt the lining of the gut. And today, again, like I mentioned, whatever I'm saying, there's enough data, enough research already happened around the topic. Yes, in regular clinical practice, these sort of nuances are not yet into the regular practice. Nobody's talking, nobody doing this work, but research is very clear. The dysbiosis directly contributes to leaky gut and immune activation. Thereby, autoimmunity will build up. Okay. So chronic infections is one major part of the problem. Major part of the problem. Anybody with autoimmunity, I mentioned, is immune dysregulation and also immune compromise.
Anybody with autoimmunity, their immune system is poor. And this will lead to overgrowth of fungi, mold, parasites, things like that. It can be driver of the problem, and eventually the poor immune system will lead to overgrowth of these issues. And these people will have SIBO, SIPO, C4, things like that. Okay. And eventually these infections can also cause molecular mimicry. Certain pathogens bear a structural resemblance to body's own proteins. Once the immune system attacks the pathogen, it may continue attacking similar shaped self tissues. And a case of mistaken identity. Infection load itself is a major driver of the autoimmunity by molecular mimicry. So again, autoimmunity is not coming out of nowhere, that there's nothing wrong in the body out of nowhere just because genes are bad we should get a problem. Nothing like it. If we have a problem today, there must be a reason of it. And as people sort of dealing with the problem, we need to understand these nuances and work on these nuances, and you will see your immune system will calm down and you will have a sort of a good healthy body. You don't have to unnecessarily continuously suffer from it. Now, there are a lot of things that we do in day-to-day routine today, which is affecting our digestive tract or affecting our hormones also. Okay. Now we are using pesticides, we're using industrial chemicals, we're using plastics. Microplastics is a big deal. Food which is not organic with a lot of antibiotics into it. We are using hormone replacement therapy which is not bioidentical in nature. We are using multiple rounds of antibiotics. We are using high sugar diets. All of these things will affect our digestive tract, leading to leaky gut, leading to poor hormonal balance, and eventually immune system start reacting. Okay. Nothing is happening out of nowhere. There must be a reason, and these are some of the reasons that typically we will find. Another finding that we keep testing people with autoimmunity: lead is a big problem, aluminium is a big problem, arsenic is a big problem, mercury is a big problem. At least these some of the things we are able to test them. Beyond that, food additives, agrochemicals, herbicide, fungicide. Now these things is not easily testable also, right? But at least when we test these people, the detoxification system is always overwhelmed. The glutathione is low. When we test these people, their pyroglutamate is high, which indirectly gives us information that ability to make more glutathione is not there. Thereby, heavy metals, petrochemicals, food additives, all of these toxic waste start accumulating in the body. And they can be something called foreign body reaction. Now, these toxins from food, from the environment, from the water, whatever we are doing in our life, body cannot eliminate anymore. It start depositing into different parts of the system, and immune system still trying to get rid of it, but it's not going away. And it's a constant trigger to the immune system. Thereby, autoimmunity may build up. And in our practice, when we remove these toxic metals or waste from the body, immune system calms down, right? So just to think, just to give another perspective, always autoimmunity does not mean it's a problem. Probably immune system trying to fight these unwanted things. It can be food particles, can be endotoxins from the infection, can be infections within the cells itself, can be toxins within the body, right? Maybe immune system just trying to eliminate the unwanted thereby. Okay. So tissue accumulation of these toxins from the infections or heavy metals can cause a big immune reaction, right? And immune system can get confused also because there's a lot of unwanted things that are lying in the body, right? And this is another important thing, very, very crucial. There's something called senescent cells. Body is constantly making healthier cells by replacing the old cells. If a person is not eating well or not digesting well, effective nutrition to the cells is reducing. Thereby, body's own ability to replace the old cells with the healthy cells would reduce. And thereby, there's more number of senescent cells, means non-performing cells.
and body wants efficiency. If this replacement of healthy cells is not happening, there itself the immune system want to get rid of them, this immunosenescent cells. So low nutrition itself can become a major trigger to the autoimmunity. And when we test people with autoimmunity, we see their proteins are low, their vitamin D is low, their B12 is low, the omega-3 is low, things like that. Okay. So it can be your diet, it can be your poor digestion, it can be your infections in the gut or in the body, it can be your heavy metals. Okay. So just to again summarize, if somebody has a problem today, does not mean that it has come just out of nowhere. And if you just, you always don't need a, you know, some expert to help you, guide you. Just do the basics. Remove your bad food, clean your gut, digest your food well, chew your food well, and your inflammatory situation will start getting better. Okay, it may need extra work beyond the basics, but doing itself will give you relief. And lot of people, they get diagnosed into autoimmune problem after stressful period. So stress itself is a major trigger of the autoimmunity, right? So if stress is our problem, emotions are our problem, which has led to the problem today, we have to let the stress go. We have to let those bad emotions go so that our system can recover from it. Now, if we still live in that period where we had this event of stressful event that happened to our body, we keep living into that time frame, we don't come out of it, no drug will help us out. Okay, so stress can put the body into fight and flight mode. Thereby, sympathetic drive is higher. Thereby, lot of biochemical changes. Thereby, immune dysregulation start happening. Right. So, just to summarize, genetics, genome may be a reason, may be a predisposing reason, may not be the only thing. Okay. Beyond that, leaky gut is a problem, unmodulated immune response, and one of the reason can be poor thymus gland also. Poor microbiome, poor diet, dehydration, deficiency, toxin, stress, non-native EMF. Now there's a lot of Wi-Fi, there's a lot of mobile networks. All of these radiation is causing a damage to the human system. We are not supposed to be under these non-native electromagnetic fields, but we are today, right? And sedentary lifestyle itself can become the reason to autoimmunity, simply because if we don't stress our body to some minimal extent, we don't again give a stimulus to the body to repair. And if repair is not happening, which means old cells are not being replaced with the healthy cells, we are bringing immune reaction to our body. Okay, so if you fix all these problems, we work on these issues, your immune system will calm down, your antibodies will start dropping down, and there comes a time when it can take time, because any problem would have come in 10, 20 years. To fix the problem, it may take few months to year, right? But or if you follow these things, there's most likely that your immune system will calm down, your antibodies will drop down, and damage to the different organ systems will get better, and you can come out of the problem. Now, typically, just to understand, okay, first level, we work on this lifestyle, diet, infection, toxins, and nourishment. And majority of the people, they start responding to it. Okay. Second layer is sometimes your thymus gland is not healthy, which is regulating the immune system. And in case that is the case, there's no very great test to sort of measure the output of the thymus gland in the regular labs, but at least from a practical standpoint of view, you fix the diet, lifestyle, all the triggers that I talked about. If you are feeling better, your markers are getting down, that means this is good enough. In some cases, let's say 10-20% cases where we've done everything, some relief is there, but it is still persisting a problem. The thymus gland peptides, which the gland is anyways producing and would have been producing, in this case it is not producing, we can bring it from outside. Okay. And beyond this, let's say somebody has a kidney problem because of the autoimmunity. There's a damage to the kidney. Now, one is we have to regulate the immune system. Second is we have to repair the organ. And in that repair, again, some use of the peptides or some use of stem cells may be useful to bring stability to the body.
It's not that we can always repair to 100%, but we can repair to the extent where it's good enough for the body and we can live a normal, healthy life. So all of these possibilities are there. Okay, so remove your inflammatory diet, balance your microbiome, seal your leaky gut, and remove your immune suppressors. I said immune is compromised also. It can be metals, it can be mycotoxins, it can be Lyme co-infections, or any other hidden infection which is there in the body. Infections is a big problem in autoimmunity. That is why it is also important that if we have to do temporary drug, it's all right to do it when the symptoms are very bad. But long-standing suppression of the immune system through the drugs is also going to flare the problem much, much more. This is important, very important. And it is also important to nourish the body. Okay, whatever is missing in the body, is it B vitamins, is zinc or magnesium or vitamin D or proteins or omega-3, whatever is missing, we can test a lot of these things and feed the body what it needs. And this is also important that we want to remove the unwanted non-performing cells so that immune system can calm down. And we should improve the autophagy. Autophagy simply means removing the unwanted cells from the body. And for that, fasting, intermittent fasting, things like that can be very, very useful. Spermidine, polyphenols, sulforain, these all can be useful things to remove the unwanted cells into the body. Okay, like I mentioned, along with the basics, thymus peptides, pineal peptides, or organ-specific peptides, organs are sort of getting under the attack. One is the dysregulation. Second is the attack on the organ. First, we fix the immune system, stabilize the immune system. And if any organ still needs extra support, we can use organ-specific peptides also. Majority cases, it will be useful, majority of cases. And in some cases, probably stem cell therapy will also do a lot of good to the immune system itself. There's enough data against which is pointing towards cell therapy can help regulate our immune system, and it may also regulate our thymus gland, which is again in autoimmune people with autoimmunity, gland may not be performing well, and stem cells from placenta derived stem cells may be very, very useful to the thymus gland itself. Okay, so that hope that this gives you a little bit of a sort of uh, idea what is the trigger of the problem and what are the different things we can do to help our immune system get better. And of course, we can discuss in the question answer session. Over to you, Dr. Ruhi. Or if you have any questions, you can raise your hands and I will answer your questions. Yeah, Tripti, you can unmute yourself. Yeah, hi, sir. Yeah. Good evening. So, if we start with the diet and all that treatment, what you are suggesting, Yeah. so suppose that the doctor is saying, coach is saying 3 months of a course you have to take. So, after 3 months, we need to continue with the same diet, or how is it? So You are going to give you will ask us to do the tests again, or how is it? Because first time I'm getting this test done from you. yeah. So first of all, Tripti, now correcting the autoimmunity is not 3 months is not enough most cases, because typically this problem will happen in decades, right? So until your autoimmune markers has sort of brought down to a favorable limit, which means that if somebody has come to us with the ANA of 200, now we cannot expect 200 will come to 30 into 3 months, right? But somebody comes to us with, let's say, ANA of 60 and some inflammation is there. So ANA 60 can become easily 30 in 3 months. So first thing, at least till the numbers become favorable, we want to continue the same process till we have sort of sorted the problem. The second case is also as we improve the digestive system, as we seal the leaky gut, most likely that your tolerance to the bad food. Now, sugars are bad, gluten is bad, milk is bad, because one of the things which is bad in these foods is the hybridization
and the protein which has become more inflammatory today to our bodies. So even that may become okay once the gut has become better. So at least till this problem is resolved, we expect you to continue doing it. Yeah, Tripti, is that good enough? Yeah, understood, sir. Yeah. Thank you. Yeah, Bushra, if you can unmute yourself. Dharma, I'll come to you. Yeah. So my question is related to what Tripti has asked about what is the journey after 3 months, as in like the coaching that you are offering is for 3 months, and then what exactly is going to happen after those 3 months, and also within those 3 months, are we expected like what you've shown about what is contributing to these autoimmune issues? A lot of factors, right, including Wi-Fi to stress to almost everything that we're living today. So what kind of what is expected out of what are we supposed to do? I mean, apart from diet and few other Yeah. things that I could understand, Yes. I just want to, because I joined a little late, and maybe I missed it, but I just want to get a clarity around it that what would these 3 months look like? Because this is the life that we're living. We cannot actually, drop everything all at once. So, what is ideally expected So, in see, these three Bushra, you months? have to understand that now, if we really has to live a healthy life, we have to follow certain regime. There's no easy way out. For example, now instead of turning the Wi-Fi all the time on, at least when you're sleeping, you can keep it off. Yeah. Keeping the phone always close to you, when you don't need it, you can keep it away. Mm-hmm. Now, one way to neutralize the damage of the non-native EMF, we can ground ourselves. For example, without chappal slippers, you can spend time on the park. You can have a bed sheet which is connected to a grounding wire. Hmm? So there are ways to reduce the exposure to the body. Mm-hmm. Okay. Now, 3 months is just a beginning of the process. 3 months is not enough to solve the problem, Mm-hmm. right? But in 3 months, you will realize that you can get better. Your numbers can get better. And like I Mm-hmm. said, depending on how big is the number, how big is the problem, it may take longer period of time. So you finish 3 months, you get confidence that you can get rid of this problem, and we will retest, reevaluate, and if necessary, we'll do another 3 months based on your output, right? The outcome that you have, right? Now, any bad food is always bad. Even to a healthy person, it is bad. Mm-hmm. So can we not replace the our major of the food with the healthy stuff rather than just continue, which is damaging our body? These are the basic things we have to. Plus, let's say one of the reason is heavy metals, and heavy metal is very high in your body. Until we remove it, now removal process will also take some time. If lead is 200, it will take a longer period of time. If lead is 60, it will take a lesser period of time to remove it. Right? So During the test, you will get to know if somebody's body is carrying those heavy metals or not. yeah, we'll test it. Absolutely. Okay, because when I am learning about all this understanding from you, and so it's like, okay, now the dishwasher we have to change the soap that we are using, because that's coming to me. That's automatically coming to me that okay, is it that I'll have to change that also? Is it that I have to change this also? So it kind of overwhelms me at the same point Well, that see so many again, things that need uh, to be. see again, see again. This is to point out to the fact that human genome is still a constant thing. It has not changed in 30, 40, 60 years. That the disease has skyrocketed. Any diabetes is growing up, autoimmunity, thyroid, IBS, every disease is growing. Human genome has not changed, but majority of the time we blame the genes and say this is genetic and you have to deal with it for life. Okay. Mhm, Now, if see, we all has 80, 85 years of life, and some lucky ones may go beyond, and some unlucky one can go before that also, mhm, right? If we have to live a healthy life, at least to the major part of our life, we have to make certain changes which we have damaged to our system, right? mhm. It is good for us, good for our family, good for our kids also. Yes, agreed. Yeah, thank you. Yeah. Dharam Singh. हाँ सर, कैन आई स्पीक हिंदी सर? हाँ जी, हाँ साहब, बिल्कुल बात करिए। हाँ सर, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है इन मॉडरेटर फेज।
हाँ। 3 years से सर मेरा एलोपैथ में भी दवाई चल रहा है, मैंने होम्योपैथ भी ट्राई किया है, आयुर्वेद भी, और सर फंक्शनल मेडिसिन भी मैंने यूएसए से ली है 3 months। ओके। बट प्रॉपर जो है ना रेमिशंस नहीं है ऐसे, तो मतलब मेरे को लगभग चल रही है जनरली खाने पीने का, बाकी जो डाइट वगैरह में फंक्शनल मेडिसिन से भी मैंने डाइट फॉलो कर रहा हूँ मैं, जैसे प्रोटीन, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब बंद है सर मेरा। बट प्रॉपर रेमिशंस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी लास्ट समय जो कोलोनोस्कोपी कराई थी वो भी नॉट बेटर, उसमें भी अल्सरेशन था नीचे हाँ, रेक्टम में। देखिए, एक तो इन्फेक्शन एक बड़ा कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ठीक है। जी। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, वी वर वर्किंग विद अ बॉय, आई थिंक ही इज 18 to 19 years old। उसको हमको करीब करीब 9 महीने से 12 महीने लग गए टू कम कॉलोनोस्कोपी नेगेटिव, एंड हिज ड्रग्स आर ऑफ। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि एकदम से चालू हो गई, हमने बुखार आया, हमने बुखार की गोली दी और सब ठीक हो गया। दीज आर नॉट इजी प्रॉब्लम्स। लेकिन विद टाइम, एज वी कंटिन्यू वर्किंग विद यू, your problem will keep reducing, 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 and it comes a time when your scans are normal. And of course, without a drug, right? It can be achieved. It just we need more patient, more time. Depends on the severity. Some cases are less problematic, some cases are more problematic. And if more problem is there, it may take more time to solve it. That's all. पर सर इंडिया में तो कोई ऐसा मतलब मिलते ही नहीं है जो फंक्शनल मेडिसिन से रिकवरी, कोई भी केसेस मैंने बहुत सर्च किए हैं, कोई भी ऐसा मिलता नहीं है कि हाँ मैंने नहीं, प्रॉपर हमारे पास बहुत फंक्शनल केसेस है। मेडिसिन। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हमने रिकवर किए हैं। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक हमारे पास इंडियन फैमिली, चाइल्ड इज अ सिक्स चाइल्ड इन मलेशिया, आई थिंक इट टुक मी 9 months to 1 year for now today. The mother confidently, after scan has come normal, she has quit all the drugs, and child is all right and gaining weight. जी ऐसे सर। बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे एक केस नहीं है, बहुत सारे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल दैट आई रिमेंबर। तो इसके लिए सर मतलब पहले जो है टेस्ट करवाने होंगे, फिर हाँ, जो आप बताएंगे वो टेस्ट। देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक बड़ा कारण है परसिस्टर इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन जा नहीं रहा है। ठीक है। टिपिकली फर्स्ट 3 months में हो सकता है आपके यूएस प्रैक्टिशनर ने इन्फेक्शन के ऊपर काम किया ही नहीं होगा, दे जस्ट वांट टू गो स्लो। ना, इन्फेक्शन के लिए हमको या तो ऑर्गेनिक एसिड करना पड़ेगा, नहीं तो माइक्रोबायोम करना पड़ेगा। कौन से पैथोजन जो परसिस्टेंटली बैठे हैं वहां पर, जो आपकी इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ, लेट्स से क्लोस्ट्रीडिया इज वन कॉमन थिंग विच कैन बी देयर, राइट? उसको उसको किल करने के लिए बहुत समय लग जाता है, और जब तक वो जाएगा नहीं सर, नहीं। उसमें उसमें तो मेरे को फंक्शनल मेडिकेशन के बाद में काफी रिलीफ हुआ है, क्योंकि पहले मेरे को जो गैस जो है ना, गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था हम्म, जब मैं एलोपैथ था। तो फंक्शनल मेडिसिन के बाद में अभी सर ये है कि मेरे को मतलब वो गैस वाला इशू खत्म हो गया एक तरीके से। हाँ, बस यही है, समय दीजिए फिर, और क्या है, आप प्रोसेस में चलते रहिए जब तक पूरा रिजॉल्व नहीं होता है। जी। तो सर इसके बाद में जो मीटिंग के बाद में मेरे को बोला गया था कि पर्सनल आपसे जो है बाई टेलीफोनिकली बात होगी, और पूरा जो है मतलब केस स्टडी किया जाएगा, फिर उसके बाद में टेस्ट वगैरह। हाँ, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो तो वही बताऊंगा फोन कॉल के ऊपर। तो वो तो देखो, मोटा मोटा अंटिल वी हैव टेस्ट एंड आई कैन शो यू द स्पेसिफिक्स, है ना? नहीं नहीं, मैं टेस्ट। तो सर एक्चुअल में जैसे मैं मेरे को आपके यहाँ से ट्रीटमेंट लेना है सर, देख जैसे, या तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, तो वही जनरली ये क्या करते हैं, हम एक डिस्कवरी कॉल जिसको बोलते हैं वो करते हैं, ताकि प्रॉब्लम को समझ लें, हमारे हिसाब से उनको समझा पाएं कि ये कारण है प्रॉब्लम के। अगर वो एग्री करते हैं तो हम एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट में और डिटेल आ जाएगा, टेस्ट के हिसाब से फिर हम प्लान बना के दे देंगे, फिर चालू कर लेंगे। दिस इज द टिपिकल प्रोसेस। तो उसमें जो भी नेसेसरी नहीं, होगा टीम आपको गाइड कर देगी। फंक्शनल मेडिसिन सर आपके यहाँ से मिलती है या अपन ऑनलाइन जैसे मंगवा सकते हैं, या मतलब जैसे आप ही नहीं के? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखो, फंक्शनल मेडिसिन का मतलब क्या है? मेथड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब जो दवाई है, दवाई कोई नई दवाई नहीं है। आपको अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिस्यूटिकल होता है,
इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, जैसे मैंने कहा क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए हाई डोज प्रोबायोटिक यूज होते हैं, एंटीबायोटिक भी यूज हो सकता है, एंटीफंगल्स भी यूज हो सकते हैं, हर्ब्स भी यूज हो सकते हैं, मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर देयर विद अस ऑल्सो। और आप वो बाहर से भी खरीद सकते हो, वो अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यस, who's next? Angelini, Angeline Patrick. Hi, you hear me? Yes, yes, ma'am. Yeah, okay. So my question is, so if Hashimoto's is attacking the kidney, you said it is possible for Hashimoto's to attack the kidney. You mentioned about peptides, No, which could no, help. I did not say that. Let me just rephrase what I said. Immune dysregulation, it Okay. may start with one organ, and depending on the organ under attack, we name it differently. If thyroid is under attack or thyroid antibodies are there, we call it Hashimoto's. Same person may, as the time passes, may get other organs under attack, and eventually other organs, kidney may be there, may not be there, not always that it will happen, but usually as the disease will progress, more or more damage systemically start happening in those people. Okay. Yeah, I just got that point because I have a patient who is positive for Hashimoto's, but no other symptoms. But we found the EGFR 13 to 16 during a routine checkup, no diabetes. So I'm just assuming that Hashimoto's, because of Hashimoto's, the same immune system is what is attacking the Yes, kidney. possible. Immune And status itself can cause the yeah, problem. in this case, yeah, so no symptoms, no trouble, no diabetes, very active. So in this case, for that kidney issue, Yes, will yes, peptides help? yes, Okay. yes. And for Hashimoto's, Yes, two things yeah, go here, ahead. Angeline. First is peptides for the immune system. We first have to regulate. See, let's say typically kidney damage, either sugars or hypertension or immune problem. Typically, these three problems are there. Typically, most of the cases, these three issues are there. Now you're saying no hypertension, no diabetes, so we are left with the immune system. So Hashimoto is there. That means immune system is dysregulated. First is we have to help the immune system get better, stabilize, and this is where thymus peptides can be useful. Then you want to improve the kidney function. This is where kidney bioregulatory peptides can be useful. Okay, for someone, okay, not this case, a separate case, only Hashimoto's is there. So is it advisable to just stop gluten, stop wheat, test antibodies, and then try again and test to see how the body responds, or take a food sensitivity test? What Yes. would you suggest? So any problem could have different multiple drivers. Food is one driver. Infections is another driver, toxin is another driver, like that. Now, let's say we want to go very slow. We change the diet, we do food allergy testing, we eliminate those things which are in the red, and we test after 3 months. If things are getting better, that means this is our major part of the problem, and we continue doing that. That in some cases we do that and we don't see a reduction into antibodies. That means we have to go beyond the food. We have to continue the food part, and we have to look other drivers also. Okay. Okay. So it is possible that wheat could not be a trigger in Hashimoto's? It is, yeah. So again, okay. Most likely it is a driver, but not in that it is always the problem. Not always the reality. But Yeah, majority okay, got cases. it. See, now let's understand one more thing is because autoimmunity is such a problem that it is not easy. It's a multifactorial complex problem. When we are dealing with people suffering and their organ systems are sort of getting attacked and bad and all of that, we want to do all possible things to reduce the pain. That is why we just takes a step, we let us remove anyway. But there could be cases where wheat is still all right, but there are other triggers to it. So what test would a food sensitivity test solve this Well, question?
To some extent, let's understand this. For example, wheat will be broken into 32 peptides. And one of the peptide is gluten, one of the peptide is gliadin. Like that, there are more peptides. Typically, food allergy testing is only looking at gliadin and gluten. It is not looking at all the peptides the wheat will be broken into, which cause problem. To some extent, food allergy test will give us some clue. In many of the cases, food allergy test can be false negative. So best way, you do the process for 3-6 months, retest the antibodies. If antibodies has reduced, that means this one was the trigger. Okay, got it. Thank you. Sana Munawar. हेलो सर। हाँ जी। आई एम 24, मतलब मैं 25 साल की हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। एंड मुझे लास्ट टाइम जो है वो 2 बार टाइफाइड हुआ है। ओके। और मेरा ईएसआर जो है अभी वो 35 है। हम लोगों ने फुल बॉडी चेकअप कराया है। और मेरे ना एक एक जॉइंट पेन में बहुत, मतलब एक एक जॉइंट्स में पेन है। सो अब हम कौन से टेस्ट ऐसे कराएं या कुछ पता करने के लिए कि क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। और मुझे सुबह उठने के बाद उठा नहीं जाता 1-1.5 घंटे तक बेड से, एंड बहुत मतलब पेन पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, तो मतलब कि इन्फ्लेमेशन तो है बॉडी के अंदर। अब आपने 2 बार आपको टाइफाइड हुआ तो हाई डोज एंटीबायोटिक चला ही होगा टू फिगर दैट जी आउट। जी। समटाइम्स एंटीबायोटिक एक पॉजिटिव आया कि उसने टाइफाइड को रिड्यूस किया, विच इज इंपॉर्टेंट। टाइफाइड इज एग्रेसिव प्रॉब्लम, लेकिन कोलेट्रल डैमेज दे कुड बी डिसबायोसिस इन द गट। अगर आपके गट के सिम्टम्स हैं, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, GERD है, इंडाइजेशन है, थिंग्स लाइक दैट, मतलब कि पोस्ट एंटीबायोटिक दिस अ डैमेज टू द माइक्रोबायोम, एंड दैट माइक्रोबायोम इज वन ऑफ द ट्रिगर टू द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, एंड आपकी ESR ज्यादा है और पेन्स है। जी तो हमको एक जी। ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कौन से ओवर ग्रोथ हुआ है पोस्ट एंटीबायोटिक्स। लॉट ऑफ टाइम फंगल इन्फेक्शंस, मोल्ड इन्फेक्शंस कैन ग्रो आफ्टर एंटीबायोटिक। ओके। बियॉन्ड दैट कई बार क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग आपको इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन से डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, एंटीबायोटिक आया और डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई आपकी बॉडी के अंदर, है ना। जी। अब आपको एंटीबायोटिक देने के बाद फ्लोरा चेंज हो गया, तो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम हो गया, तो जो फूड आपको पहले डाइजेस्ट होते थे, हो सकता है आज डाइजेस्ट नहीं हो रहे होंगे, हाँ, इट इज ट्रू। है ना। तो जो फूड है उसको हटाएंगे। फूड एलर्जी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक इन्फेक्शन कौन से ओवर ग्रोथ हुए हैं, डिसबायोसिस किस तरह का है उसको टेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को टेस्ट कर सकते हैं, हैवी मेटल को टेस्ट कर सकते हैं। देन वी विल नो कि आपके ट्रिगर्स क्या क्या हैं। धीरे 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 उन सब के ऊपर काम करके आपको स्टेबलाइज किया जा सकता है, पेन्स को कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ओके, बट जब मेरे को टाइफाइड हुआ था तब मेरे को कोई पेन नहीं थे। अभी मेरे को ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए, उसके बाद मेरे को पेन्स हो रहे हैं। एंड मैंने जो है एक बार औरतों को भी दिखाया, तो क्या अब हम दोबारा औरतों को दिखाएं, क्योंकि मेरे मतलब जो फिंगर्स होती है ना उसमें भी पेन हो रहा है अब। देखिए, आपको एक चीज समझते हैं कि ऑर्थो डॉक्टर एक हड्डी का डॉक्टर है, वो इम्यूनिटी का डॉक्टर नहीं है। हम्म? नहीं नहीं, अगर मेरे हड्डी, पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो और स्वेलिंग भी आ रही थी असल में। मेरे फेस पे स्वेलिंग आ रही है अब, और मेरे पैर में स्वेलिंग आ रही है। नहीं वही इसलिए मैं, हमने औरतों को दिखाया था। नहीं आप समझो मेरी बात, ये कोई हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए टिपिकली रिमेटोलॉजिस्ट है। अब लेकिन ओके। रिमेटोलॉजिस्ट का क्या रहेगा, वो आपका ऑटो एंटीबॉडी टाइटर्स करेंगे। अगर ऑटो एंटीबॉडी टाइटर्स पॉजिटिव आते हैं तो आपको वो इम्यून सप्रेसेंट्स ऑफ वेरियस काइंड चालू करेंगे, तो आपका पेन कम होगा। लेकिन वहां भी प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो ड्राइवर है आपके प्रॉब्लम का, जिस वजह से आपका प्रॉब्लम चालू हुआ है, वो मिसिंग हो जाएगा, जिसको हम ओके। एटलीस्ट फंक्शनल मेडिसिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एंटीबायोटिक के बाद जो डैमेज माइक्रोफ्लोरा में हुआ उसको हम नॉर्मल स्टेट पे लेके जाएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम काम हो जाए और आपका एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव है नहीं है, कई बार नहीं, इनिशियल स्टेज पे पॉजिटिव नहीं भी होता है, ओके, तो उसको ठीक किया जा सकता है। टेम्पररी पेन किलर लिया जा सकता है, लेकिन जो ड्राइवर है, जो कारण है, उसको कम करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए बिना लॉट ऑफ ड्रग्स। ठीक है। एंड मैंने ना वेट गेन के लिए, बिकॉज आई एम वेरी थिन, तो मेरे घर वालों ने मुझे वेट गेन के लिए मेडिसिन खिलाई थी। और जब हमने उसको टेस्टिंग वगैरह कुछ कराया तो उसमें स्टेरॉइड्स थे।
वेट गेन की कौन सी दवाई अच्छा ठीक है, स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड दिया। आयुर्वेदिक उन्होंने बोल के कुछ दिया था पाउडर टाइप में, बट जब वो टेस्ट वगैरह हो तो उसमें जो है वो थे, मतलब टेस्ट इन द सेंस मेरी बॉडी जब मैंने उसको कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, सो मेरी बॉडी ने एक बहुत अजीब सा रिएक्ट किया। मैंने अपने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा आपने कोई ऐसी मेडिसिन, मैं फिर उनको बताया मैंने वेट गेन के लिए मेडिसिन खाई थी, तो उन्होंने कहा ये स्टेरॉइड के सिम्टम्स हैं जो आप बता रही हो सब। नहीं देखिए, वो तो मैं आई डोंट नो अबाउट इट, बट ठीक है, अगर उससे कुछ नुकसान हुआ है तो देखा जा सकता है, बट आई कैन नॉट बी ओके। सर्टेन अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो ये बड़ी इजीली फिक्सेबल प्रॉब्लम है, अर्ली ऑन है, तो आप यंग हैं तो ठीक है, चीज़ें जल्दी से ठीक हो सकती हैं, बट हमेशा ऑटोइम्यूनिटी के लिए 6-9 महीने रखना है, इतना लंबा प्रॉब्लम अगर है तो। ठीक है, इतना नंबर। ओके, डन, थैंक यू। सुरभि वर्मा, सुरभि जी। ओके, डॉक्टर विक्रम सिंह। हाँ सर, हेलो। हाँ जी सर जी। हाँ सर, मेरे को उधर है ना कॉलेज टाइम में है ना टाइफाइड होता है सर, बार बार मेरे को है ना टाइफाइड हुआ, तो सर मैंने है ना 5-6 साल सर है ना काफी सारे एंटीबायोटिक्स लिए थे। इसमें ये बना रहा था ना, है ना सिक्लोस्पोरिन ग्रुप है, फिर मैंने है ना फ्लोरोक्विनोन जो है ना हाँ लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह लिए हाँ थे। हाँ सर। तो तो अब जाके मेरे को है ना जॉइंट में पेन है, मसल्स में वीकनेस है, और इसमें मेरे है ना प्लेटलेट सर 1,20,000 आते हैं, और मेरा है ना ये सर बढ़ा हुआ आता है, और बाकी मेरे जितने टेस्ट है ना ऑटो इम्यूनिटी के, एएनए ब्लड है, हाँ सीआरपी है, वो सब नेगेटिव आ रहे हैं। राइट सर। मेरा ये सर साथ आता है ये सर। हाँ सर देखिए, एक तो है कि परसिस्टर इन्फेक्शंस, कई बार टाइफॉइड का कुछ वेरिएंट अभी भी परसिस्टेंट वहां बैठा होगा। दूसरा है कि जब भी हम मल्टीपल राउंड्स ऑफ एंटीबायोटिक करेंगे, मोल्ड, कैंडिडा ओवरग्रोथ होता है। ओके, तो इसकी वजह से परसिस्टेंट ईएसआर बढ़ा रहेगा। माइक्रोबायोम नहीं तो ऑर्गेनिक एसिड में हमको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके अंदर कौन से इन्फेक्शन हैं। दूसरा है कि आपको मल्टीपल टाइम अगर टाइफॉइड हुआ है तो इस वन मीन ऑफ दैट इज कि आपका इम्यून सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अभी अगर आपका प्लेटलेट काउंट डाउन रहता है तो कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन भी रहेगा, राइट। एंड लॉट ऑफ टाइम ऑटोइम्यूनिटी के अंदर वायरल इन्फेक्शन का एक बड़ा रोल है। तो अपने केस में सर आपको जो भी गट में परसिस्टर इन्फेक्शंस हैं, चाहे मोल्ड है चाहे कुछ और इन्फेक्शन है, जिसको हम माइक्रोबायोम तो ऑर्गेनिक एसिड पे देख सकते हैं, उसको क्लीन करना है। इम्यून की सपोर्ट के लिए फर्स्ट लेवल पे एंटीवायरल में हम विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, licorice, lysine, these are potent antiviral nutrients। उसके बियॉन्ड अगर चाहिए तो थाइमोसिन अल्फा 1, थाइमोसिन अल्फा 1 लिवर के लिए अप्रूव्ड है, लिवर वायरल इन्फेक्शंस के लिए। बट अपने केस में अगर परसिस्टेंटली आपका प्लेटलेट काउंट लो है तो थाइमोसिन अल्फा 1 विल हेल्प, डिसरेगुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम को ठीक करेगा, प्लस आपका स्ट्रेंथनिंग करेगा ताकि प्लेटलेट नॉर्मल की तरफ चला जाएगा और आपका पेन वेन चला जाएगा साहब। तो किया जा सकता है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा ये जो अनवर शेख है ना आपके अनवर शेख, तो इनको मैंने वो सारे जो है ना हाँ हाँ ये एफएमडी का, और आपके है ना टॉक्सिन की रिपोर्ट वगैरह जो आपने मेरे हाँ को है ना हाँ कहा था, हाँ सर। है। हाँ, डिस्कवरी कॉल लिया था, उसके बाद में वो सब मैंने है ना करवा के रखे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैंने है ना सजा है ना सारे करवा दिए। एक वो आपका होता है ना न्यूट्रीफिट प्रोफाइल, वो भी हाँ हाँ करवा हाँ, दिया। यस सर, यस। उसका भी रिजल्ट आ गया, तो मतलब टोटल है ना 15,000 के टेस्ट हुए। हाँ सर। तो अभी सर क्या है कि सर मेरे इधर है ना जॉइंट्स है ना सर, इसमें है ना सब में पेन हो रहा है ना, फिंगर में स्टिफनेस आती हाँ है, हाँ। स्पाइन है मेरा, पूरा स्पाइन में जो है वो सब हो रहा है, डेसिकेशन हुआ है स्पाइन में। फिर ये अपना है एंकल जॉइंट में पेन है, नी जॉइंट में है, हिप जॉइंट में पेन आ रहा है। ये सब सब हो गया सब तो। नो वरी सर, आप यंग हैं तो ये सब चीज़ों को हम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप टेस्ट करा ले हैं, प्रोसेस चालू कर लेते हैं, इट्स वेरी तो सर डुएबल सर। मैं ये सर बोल रहा हूँ, इसमें सर वो सर जो है दो इशू आ रहे हैं, ये सर आ रहा है, वो सर है ना हाँ कंटेंट हाँ, सर। वो इन्फेक्शन तो है ना साहब, देखिए परसिस्टर इन्फेक्शन हैं, वो चाहे मोल्ड हो, चाहे वो कैंडिडा हो, चाहे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो न्यूट्रीफिट में भी कुछ डेटा आ जाएगा। उसको अगर आप मेरे को अभी दिखा दें तो मैं अभी आपको कुछ डेटा बता सकता हूँ उसमें।
तो we'll work on that, sir. Not to worry. सर तो उसके लिए सर वो सर जो रिपोर्ट सर देखो सर वो सर आगे हैं सारे तो ठीक है इसमें सर, फिर ठीक आपका है वो सर, ट्रीटमेंट चालू कर लेते सर, कर लेते, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। तो सर उसमें सर मैंने आपको एक उसे एमआरआई भेजी थी सर, एमआरआई का रिपोर्ट भी भेजा था मैंने स्पेन का, अच्छा आपने देखा होगा। नहीं अभी तो देखिए मेरे पास नहीं आया सर डेटा, मैं अनवर से बात कर लूंगा। देखिए दो चीजें हैं, अपना गोल है इम्यून को स्टेबलाइज करने का। स्ट्रक्चरली अगर प्रॉब्लम है उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसमें तो थोड़ा हम योग प्राणायाम और कायरोप्रैक्टिस थोड़ा हम स्पाइन को बैलेंस कर सकते हैं। इम्यून का जो प्रॉब्लम है उसको हम स्टेबलाइज कर लेंगे। तो सर ये सर ये जो है ये जो ये सर वगैरह सर इससे बड़ा है क्या ये वो सर? कम हो जाएगा सर, ये सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम जब भी इस इन्फेक्शन को हटाएंगे ये सर कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, जो भी आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाएगा सर फॉर श्योर। इम्यून का प्रॉब्लम रेगुलेट हो जाएगा। दिन में सर आराम हो जाएगा ये सर हाँ हाँ सर, वगैरह? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हम्म, ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्रियंका गुप्ता। Good evening, sir. हाँ जी, हाँ जी। Thank you for the good lecture. I have two, three questions actually, and it's actually not too much into this topic Yeah, only. no It's problem. more related with PANS, PANDAS, and Yeah, ASD on spectrum yeah, kids. yeah, So the child is now 5 years old, yeah. and she is having this NSE level is 46. We read the carnitine profile also. The total carnitine is 8.51, and free is 6.38. Acetyl carnitine is 2.13, and free carnitine or acetyl carnitine ratio is also 3. Along with that, there are various amino acid. आपका आवाज बंद हो गया मैडम। I lost you, ma'am. Okay, if you rejoin, you can sort of. Okay, Surbi, meanwhile, Surbi, आप question. Yeah. Yeah, Hello, doctor. Sorry, I got disconnected earlier. no problem. Actually, I've got this autoimmune disease called IgA nephropathy. Yeah, It got triggered post my C-section delivery. I didn't have any infection or in viral or bacterial. yeah. Um, but I'm taking steroid and all for that. Apart from that, I have UCTD also because of my joint pains, Yeah. and my liver enzymes are also very high from last 2 to 3 years. I did all kind of tests for my liver. Still, it's undiagnosed. Like I've done the biopsy, I've done celiac, sarcoidosis, all kind of tests, but still my enzymes are not going down. So doctor mentioned that it may be due to autoimmune, but I have done the test like or biopsy for autoimmune hepatitis. So that also came as negative. What could be the reason? Because my food is also like I take homemade food only mostly. तो पहले तो आईजी नेफ्रोपैथी में ग्लूटेन हैज अ मेजर रोल। Yeah, that. Yeah. आपको बंद कर देना चाहिए। दूसरा है कि नाउ अगर लिवर एंजाइम ज्यादा हैं विच मींस इज अ डैमेज दैट इज कांस्टेंट ट्रिगर टू द डैमेज ऑफ लिवर इज हैपनिंग। Correct. And one of the major thing that we typically see is the dysbiosis, infections leading to endotoxins leading to liver damage. जितने भी Okay. आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का प्रॉब्लम है जिसमें Mhm. ओटीपीटीज बढ़ता है उसमें आपका इन्फेक्शंस इन द इंटेस्टाइन इज अ मेजर मेजर ट्रिगर। Okay. अगर आपको मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो चुका है ऑलरेडी तो मतलब कि गट का एक रोल तो है ही वहां पर, वही Okay. आपको लिवर को प्रॉब्लम करेगा। अगर लिवर की ऑटोइम्यूनिटी भी पॉजिटिव आती है फिर भी क्या करेंगे? Mhm. हम्म? अगर आप स्टेरॉइड्स पे हो इस समय पे आपके अंदर फंगल इन्फेक्शन ओवर ग्रो करेगा। मैं स्टेरॉइड पे थी 6 months. नाउ आई एम इन इम्यूनोसप्रेसेंट. चलिए, Correct. चाहे Yeah. आप इम्यून सप्रेसेंट पे हो चाहे आप स्टेरॉइड पे हो, इम्यून को कॉम्प्रोमाइज किया हमने टेम्पररी किडनी को Yeah. प्रोटेक्ट करने के लिए। Yeah. अब Yeah. उसकी वजह से इन्फेक्शन ग्रो करेगा बॉडी के अंदर, Mhm. इन्फेक्शन से टॉक्सिन बनेगा, टॉक्सिन लिवर को इम्पैक्ट करेगा। Okay. So if I get any infection, but I do not have any symptom of infection, हाँ, like.
अभी हाँ एग्जैक्टली तो दीज आर क्रॉनिक सिमरिंग इन्फेक्शन, दीज आर नॉट अक्यूट इन्फेक्शन जो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दीज आर क्रॉनिक इन्फेक्शन जो परसिस्टेंटली टॉक्सिन बनाती हैं। हो सकता है आपको बॉडी में लेस हो, थकान हो, फैटीग हो, करेक्ट। अच्छा। स्वेटिंग आता हो रात को, लेकिन फीवर नहीं आएगा। या। हम्म? तो टेस्ट पे कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शन है। हो सकता है आपका आपका भी, जैसे डॉक्टर विक्रम साहब ने कहा कि आप उनका ईएसआर बढ़ा रहता है, आप भी चेक कर लो एक बार। तो इन्फेक्शन एक बड़ा बड़ा या कारण। मेरा ईएसआर अभी नॉर्मल है। कितना है नॉर्मल, आई कितना? थिंक 8, इट वाज 8 ठीक, चलो because I'm yeah, but I don't understand why my liver enzymes are still high. I did all kind of दूसरा tests दूसरा and आपका जो ड्रग इटसेल्फ कैन कॉज लिवर एंजाइम टू बी हाई। जो भी आप इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो आई डोंट नो, बट दैट इटसेल्फ कैन कॉज अ डैमेज टू लिवर। okay, so what other option? I have to take this for 2 years. 2 साल तो मुझे नहीं, लेना। ऐसा देखो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी फंडामेंटल थिंग। हम्म, कोई कहता है कि 2 साल लेके आपका किडनी का प्रोटेक्शन हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं नहीं हो। आएगा, दिस इज फॉल्स, राइट? करेक्ट। आई एम सेइंग कि अगर किसी ट्रिगर की वजह से, टिपिकली अगर आपने उस समय पे एंटीबायोटिक खाया ही होगा, आपका सी सेक्शन हुआ, सी एंटीबायोटिक सेक्शन के लिए एंटीबायोटिक खाया था, करेक्ट। खाया है ना रिकवरी के लिए, उससे या। माइक्रोबायोम में कुछ ट्रिगर हुआ होगा जिससे कैस्केड ऑफ ऑटोइम्यूनिटी चालू हो गया आपके अंदर। हमको ओके। उसको रिकवर करना है। नहीं तो एंडलेस स्टोरी है मैडम, 2 महीने 2 साल डॉक्टर कहेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं अभी हुआ नहीं है, फिर से करते हैं। तो फूड से ये कंट्रोल हो सकता है क्या? मीन्स नहीं मीन्स आई नहीं यूजुअली डोंट ईट दैट मच, और मैं बहुत नहीं डाइट कंट्रोल नहीं किया नहीं, है मैंने। ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं है, इट्स नॉट अ सिंपल इक्वेशन। फूड इज वन पार्ट, माइक्रोबायोम इज अनदर पार्ट, न्यूट्रिशन इज अनदर पार्ट, टॉक्सिन इज अनदर पार्ट। समटाइम्स यू आर लो ऑन जिंक। आपका एक मेजर इम्यून का रेगुलेटर है, वो है थाइमस ग्लैंड। आपका लो जिंक हुआ, आपका थाइमस ग्लैंड का डिसफंक्शन हुआ, आपके इम्यून का डिसरेगुलेशन हो गया। अच्छा। इट्स ओके। ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जो हम बता रहे हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स की, हमको बेसिक के बियॉन्ड, आपको ये डायग्नोसिस, आपकी ये दवाई है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम दवाई सेम ही होता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इम्यून सप्रेसेंट सिमिलर से होते हैं। ओके, वो ठीक है टेम्परली, इट्स ऑल राइट, बट हमको लॉन्ग टर्म के लिए किसी 80 80 साल 60 साल के बंदे को ऑटोइम्यूनिटी हो, चलो 10 20 साल हमने दवाई पे निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन चल जाएगा। अगर 20 30 साल में ऑटोइम्यूनिटी आ गया तो कब कब तक हम ड्रग के साथ चलेंगे, राइट? तो हमको ऑल पॉसिबल एक्सप्लोरेशन करना चाहिए कि मेरी बॉडी में इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है, और मेरे को धीरे 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 ये प्रॉब्लम को कम करना, ताकि मेरे को ड्रग ना यूज करना पड़े, मेरा लिवर ठीक रहे, कनेक्टिव टिश्यू ठीक रहे, किडनी ठीक रहे, ऑल दैट कैन बी वर्कड अपॉन। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू विलिंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। जी। ओके ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। प्रियंका गुप्ता। Yes, sir. Last time I don't know till where you have हाँ, heard. आप कार्निटीन का कुछ बता रहे थे, देखो मेरे को रेशियो तो याद नहीं है, वो रेफरेंस क्या रहेगा, मेरे को मोटा मोटा पिक्चर बता दो, फिर मैं आई विल ट्राई टू आंसर। तो अभी पिक्चर ये है कि होमोसिस्टिन का लेवल, एचएससीआरपी का लेवल, वो सब कुछ नॉर्मल आ गया है। और वी हैव डन राउंड्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल like with the drugs or with herbal antimicrobial protocol and all. So राउंड्स के बाद में फिर भी अभी हाइपर एक्टिविटी है। तो अभी अभी रिसेंट में एल कार्निटिन कराया, टोटल एल कार्निटिन वाज वेरी लो, इट्स 8.51। तो मे बी प्राइमरीली जीन जीन अफेक्टेड है या नहीं है, आई एम नॉट, हो अभी तक जीन टेस्ट हुआ नहीं है। ठीक हो सो सकता है। एनएससी लेवल्स जो है हाँ, वो भी 46 हैं, और उसके साथ में सारे अमीनो एसिड्स करीब करीब लो हैं, प्लाज्मा अमीनो एसिड्स। एंड देन उसका यूरिन, उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स में आई थिंक हिप्यूरिक एसिड एंड अनदर 2 3 थिंग्स आर देयर, द पैरामीटर्स आर ऑफ देयर आल्सो। कम है, सो हिप्यूरिक एसिड ज्यादा है कि कम है? जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेक इट अगेन। हाँ, अगर तो ज्यादा है, कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हिप्यूरिक एसिड कम, क्लॉस्ट्रिडिया कैंडिडा के लिए बहुत ज्यादा था, एस्परजिलस के लिए भी था, हाँ पर कितने राउंड्स करेंगे इसमें? इम्यून बैलेंसिंग अगर बेटर करेंगे तो हाँ, क्या इसके रिजल्ट्स बेटर मिल जाएंगे? ये है, क्योंकि इन्फेक्शन को ठीक है, हमने बहुत फेयर बार फेयर, ट्राई करा ना, राउंड्स एंड राउंड्स कर चुके हैं। ठीक है मैडम। हाँ, तो लाइक आई सेड, फर्स्ट लेवल पे हम इन्फेक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भी हम्म एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामीन का स्टेबिलिटी बन जाए, ग्लूटामेट का हम्म स्टेबिलिटी बन जाए, थिंग्स लाइक हम्म दैट। हम्म अगर हम्म इन्फेक्शन हटाने के बाद भी बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, एक उसका मतलब रहता है कि इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज अगर रहता है तो फिर हम कुछ केसेस में थाइमस पेप्टाइड ओरल यूज करते हैं, सम केसेस में इंजेक्टेबल यूज करते हैं, सम केसेस में हमको स्टेम सेल से फायदा मिलता है। बट इन स्टेम सेल्स के लिए अगेन द सेम थ्योरी इज गोइंग ऑन कि आपने पेप्टाइड भी यूज कर लिया। राइट नाउ आई एम यूजिंग इम्यूनोलिन आल्सो फॉर द लीकी गट रिपेयर bit in a better way कि it can मतलब maybe it can और बस BPC 157 also I was planning to start but have not started yet. And after the infection cleaning only we can do stem cells, correct? नहीं देखिए, it is a logical thing to say that But largely this is अगर हम not नहीं this is not practical. This is only logical. नहीं, मैं आपको मेरा जो अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो राइट ब्लैक एंड व्हाइट आंसर, है ना। हम्म हम स्टेम सेल्स कब कराते हैं? अपना जब गोल है ब्रेन की इंप्रूवमेंट करना, हम्म है ना, हम्म ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करना। हम्म हम्म। हम्म तो उसके लिए हम कहते हैं कि पहले न्यूट्रिशन अप कर लो, टॉक्सिन इन्फेक्शन को हटा दो, ताकि ब्रेन स्टेम सेल से हम मैक्सिमम हम्म बेनिफिट ले पाए, हम्म ताकि ब्रेन का कैपेसिटी इंप्रूव कर जाए। हम्म हम्म लेकिन अगर अपने परसिस्टेंट इन्फेक्शन जा नहीं रहा है तो उस केस में स्टेम सेल्स अपने इम्यून सिस्टम को हेल्प करने में आ सकते हैं। बिफोर इवन वी टारगेट द ब्रेन, वी हैव टू टारगेट द इम्यून सिस्टम। इस केस में हम एन के सेल्स भी कर सकते हैं। हम्म ओके। हाँ, इंजेक्शंस भी तो कर क्योंकि सकते हैं, ब्रेन को करेक्ट। तो डाउन स्ट्रीम ब्रेन तो तभी ठीक होगा जब पर सर इम्यून इस इम्यूनिटी। केस इस केस में पहले इन्फेक्शियस या ऑटोइम्यून पैनल कराना चाहिए क्या एंसेफेलाइटिस का? और देखो, अब क्या आएगा, बिकॉज 3 इयर्स हो गए हैं, एसो टाइटर भी आएगा क्या नहीं, पॉजिटिव? अगर कर एएसओ कर लेना चाहिए, करने में तो कोई नुकसान नहीं है। अगर परसिस्टर बैठा है तो डेटा आएगा तो उसके लिए ड्रग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बट एसो टाइटर अभी मतलब ब्लड ब्लड में आ जाएगा या फिर उसका एलपी करा करके और फिर करें? सॉरी, सीएसएफ के थ्रू करें या ब्लड के थ्रू करें? ब्लड में देखिए, पहला चीज तो है कि ब्लड में फर्स्ट लेवल तो ब्लड है, सीएफ तो थोड़ा अग्रेसिव प्रोसेस है, उसमें भी हाँ, कितना लैब इसीलिए। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। Correct. अ, And then another one is there that जैसे फ्रेट एंटीबॉडीज एंड ऑल द पीपल आर टेलिंग, बट फ्रेट एंटीबॉडीज में पेरिफेरल एंटीबॉडीज आती है अगर आप टेस्ट कराते हो ब्लड का, तो उसमें आपको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो तो सीएसएफ के थ्रू ही पता चलती है, क्योंकि बिकॉज यूके वगैरह में सब में वहां पर सीएसएफ का ही टेस्ट है, नहीं बट इंडिया में वी आर डूइंग मोर आप ऐसा विद द समझ ब्लड वर्क। इसको समझ लो, टेक्निकली यूर राइट, टेक्निकली कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं, जो आप कह रहे हो वो सही बात है। लेकिन हम्म हम्म अगर मेरी एंटीबॉडी सिस्टम में पॉजिटिव आया कि नहीं आया, एंटीबॉडी तो मेरे को ये बताएगा कि इम्यून का डिसरेगुलेशन है कि नहीं है। हम्म अल्टीमेटली तो मेरे ऑटोइम्यूनिटी करेक्ट करना है मेरे को उस बच्चे की। आज करेक्ट। क्या हो रहा है कि डॉक्टर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, फिर उसको लिकोपिरिन पे डाल देते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूके हो, चाहे हम सीएसएफ में करें चाहे सीरम में करें। हम्म अगर हम्म कहीं भी एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है या किसी भी तरह का हम्म एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, तो मतलब इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन है, वो तो एस्टेब्लिश हो गया ना। अपना गोल है हाँ। उसके बियॉन्ड एंड सी डिजीज को फर्दर एंड फर्दर डायग्नोस करने से कुछ मतलब नहीं है, हमको इम्यून को रेगुलेट करना है ताकि वो डिजीज रुक जाए, हम्म राइट। And तो one एक्शन more thing, एक्शंस के if ऊपर we are काम करना मैडम। okay, I have to take your consult also. As a co-consult, I have to do it. And one more thing, sir, uh, अगर ये like if we are doing rounds of cleaning and all, we are using like good nutrients also. Like for gut microbiome also, I am supporting it with the few probiotics, but still it is not responding in that way. That because gut dysfunction अभी भी है, chronic diarrhea अभी भी है, हाँ, नहीं ही जा क्रॉनिक रहा है। अगर क्रॉनिक डायरिया है तो इन्फेक्शन परसिस्टेंट है मैडम। अगर हमने हिट नहीं किया है उस जगह को, जो भी मिसिंग है उसको देखना चाहिए। आई डोंट नो कि आई डोंट आप मेरे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो, अगर हम्म चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, कई बार हमारे टूल कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम क्लिनिकली गलत डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ठीक डिसीजन ले पा रहे हैं, तो वॉट एवर इट मे बी, लेट्स रीवैल्यूएट। अगर परसिस्टेंट डायरिया बना हुआ है कंसिस्टेंटली, उसको हम्म इन आईबीएस के सिम्टम्स हैं बच्चे को, तो इन्फेक्शन इज द प्ले, उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके लिए फर्स्ट लेवल इन्फेक्शन, सेकेंड लेवल इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी में फर्स्ट लेवल पेप्टाइड्स है, सेकेंड थेरेपी में स्टेम सेल्स भी आ सकते हैं, कॉड ब्लड भी आ सकता है, एनके सेल्स भी आ सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में बैन कर दिया है तो इट्स अनदर प्रॉब्लम।
हाँ, बट एटलीस्ट कुछ करना चाहिए बच्चे के लिए। विदाउट लाइक पेप्टाइड को यूज करके, बिकॉज सिलैंक वगैरह यूज करा था बट उसका कुछ इतना यूज नहीं हुआ है, तो उसके तो ब्रेन के उसके लिए होगा ना मैडम, हाँ, ब्रेन के लिए होगा। न्यूरोपेप्टाइड यूज हुआ था, करेक्ट है, उसकी फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए, बट हाँ उसमें भी कोई हाँ, बस बहुत ऐसा मेजर चेंज आया नहीं है। जब तक इम्यून रेगुलेट नहीं होगा एल एल हम थर्टी थोड़ा। सेवन भी यूज करा, इवन हाँ, इंजेक्टेबल एल एल कितना थर्टी देर सेवन पर कितना देर उसमें तक भी ठीक, कुछ नहीं हुआ, कितना देर करीब ठीक? 21 डेज। समटाइम्स वी हैव टू एक्सटेंडेड यूज मैडम, जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। सर इसकी बजाय मैं मतलब अभी एक बार पहले स्टेम सेल्स करा ले, बिकॉज टाइम इज लूजिंग। हाँ, एनके सेल कर लीजिए मैडम। एनके सेल और किलेशन कब आएगा? नहीं, अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स इम्यून सप्रेसेंट है, राइट? हैवी मेटल है ना, अगर हैवी हैवी मेटल मेटल बैठा है वहां पर, हम्म वो इम्यून को अपलिफ्ट नहीं होने देगा। इम्यून अपलिफ्ट नहीं होगा तो इन्फेक्शन वापस आता रहेगा। हम्म। तो अभी से ही आपको किलेशन करना है अगर आपको हैवी मेटल प्रेजेंट है आपकी बॉडी, बच्चे की बॉडी में। ओके, एंड लाइक आईवी किलेशन इज पॉसिबल? नहीं, और बच्चा नहीं बैठता है हैवी किलेशन में, इसके लिए हमको सेम मॉलिक्यूल्स रेक्टल सपोजिटरी में यूज करते हैं, नहीं तो ईडीटी डिपेंड्स ऑन एंड व्हाट इज देयर, डीएमएसओ। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज देयर। अगर तो लेड है तो हम्म ईडीटी जरूरी है, अगर मरकुरी एल्यूमिनियम है तो ओरल डीएमएसए भी काम आ जाता है। तो डिपेंड्स मर्क्यूरी ऑन सब। एल्यूमिनियम लेड बेरियम स्ट्रोंटियम। तो ईडीटी प्लस डीएमएसए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ओके, okay, then I will further take an appointment and then we have to dig in inside this. ठीक है मैडम, आई विल Correct? ट्राई वॉट एवर बेस्ट वी कैन हैव। Yeah. Okay, thank you, sir. Thanks a lot. नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, आई थिंक if anybody else you can unmute yourself, I'll just look at the question। मुझे कौन से टेस्ट कर, so धर्म सिंह जी वो टीम बता देगा आपको। Okay, I think we have answered the questions in the chat। Is AST autoimmune disease? Yes, there is enough sort of literature data connecting ASD to autoimmune problem। तो well, immune system, let's not call it autoimmunity per se, let's say immune dysregulation at least there। अब उसमें जब तक हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी हम इंडिया में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूएस में तो बहुत बहुत सारा एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है, एंटी माइलिन एंड ऑल दैट। तो ठीक है, जब तक हमारे पास डेटा नहीं, एटलीस्ट वी कैन कॉल इट इम्यून डिसरेगुलेशन। इम्यून डिसरेगुलेशन डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म और एएसडी स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए काम करना चाहिए। ऑलराइट। Sir, excuse me, this is Ripti here. या Sir, I have a problem of this DLE. So, for DLE, all the tests will be done, I understood. डीएल इज व्हाट मैम? Discoid lupus, it's a हाँ skin हाँ, राइट problem. राइट, वो तो फंगल का एक बड़ा प्रॉब्लम है उसके अंदर, जब भी इन्फेक्शंस को ठीक करेंगे वो चला जाएगा। Okay, okay. So, इसके लिए do you give any supplements also, or only the diet we will नो be? नो, सो अगेन लाइक आई सेड, अगर आपके अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए चाहे वो प्रोबायोटिक है, चाहे वो डाइट है, चाहे हर्बल्स हैं, चाहे डिपेंड्स ऑन व्हाट इन्फेक्शन इज देयर, फार्मास्यूटिकल आ सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन का कमी है, न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट आएंगे। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है फंडामेंटली, कि समथिंग इज मिसिंग इन आवर बॉडी, हम सप्लीमेंट की से उसको अपने आप को बायोसिमिलर्स अपने बॉडी को दे रहे हैं। Correct, अगर correct. आपके अंदर इन्फेक्शन है क्योंकि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज क्योंकि लेड बैठा है आपके अंदर, लेड को निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन आपकी प्रॉब्लम के ड्राइवर्स क्या है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सप्लीमेंट इज वन पार्ट ऑफ द गेम एंड इट मे Okay, नीड मल्टीपल थिंग्स अलोंग साइड। okay, okay. Okay, sir. Thank you for that, sir. ऑलराइट, ठीक है, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, वी कैन रैप इट अप देन। थैंक यू सो मच, होप इट वाज यूजफुल। ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल Just कॉम्प्लिकेटेड one टॉपिक। second, just हाँ let. Yeah. You told that some, like Hashimoto's has triggered a kidney issue. Will gallbladder issue is also triggering something? Will that be possible for inflammation? I mean, possible reason for inflammation and autoimmune condition? Can poor health of the liver and gallbladder be a problem behind autoimmunity? Yes, it is possible. Sure, sir. So the regular test, like the autoimmune panel, is the one we have to get tested. No, no, no. See, autoimmune panels will tell you the disease, the name of the disease. Mm-hmm. But drivers of the problem
which is infection, poor liver health, or toxins, or poor food, or poor nutrition, will help you understand the drivers of the problem, and thereby we can put an action to solve the problem. The two things. One is diagnosis, running behind a diagnosis. We need to know a diagnosis. Fantastic. But उसके problem, उसके पीछे क्या है diagnosis के? That is we have to work on. Okay, so then Okay. another question. For the mold, candida, and Lyme diseases, the testing is not, I think it's not as Yeah. good as it is in the outside India. Yeah, So मोल्ड what का is see मोल्ड के लिए हम माइकोटॉक्सिन्स कर सकते हैं, वो यूएस में होता है, इंडिया में किट मिल जाता है, लेकिन मोल्ड के मेटाबोलाइट्स का टेस्टिंग हम इंडिया में कर पा रहे हैं. हाँ, लाइम का टेस्टिंग का थोड़ा टेस्टिंग कुछ लेवल का होता है, कुछ नहीं होता है. वी आर वर्किंग विद अ फिनिश कंपनी टू ब्रिंग अ गुड टेस्टिंग टू इंडिया, बट यस वी आर स्टिल फार बिहाइंड ऑन दैट फ्रंट. Okay, for those, do we have any alternative tests, sir, or should we keep waiting No, well, something? no. See, whatever. See, again, let's understand this कि जो भी इंडिया में अवेलेबल है, लाल पैथ के ऊपर कुछ बोरेलिया का टेस्टिंग होता है, तो जो भी अवेलेबल है उसको टेस्ट कर लेना चाहिए. Okay. We may not have a perfect system, but whatever best is there, at least we should do it and then get going at least to do some. Agar we don't have a specific test, we can use herbals high dose to reduce the Lyme infections at least. Okay, sir. Like that. Same for Candida also. Yes. Candida we can test. Candida is not. Yeah, thank you. All right. Dr. Ruhi, over to you. No, go ahead, please. No, then fine. I think then, well, thank you so much, everyone. I appreciate your time. Good evening. Thank you, sir.